Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic of discussion is mm, the role of police, with special reference to Pakistan. This topic is on the role of police. Uh, as far as the criminal justice system is concerned, the role of police is quite evident, important, and significant, unmatchable, and unprecedented. Uh, for the implementation of criminal justice system, police uh, a foundation stone. Police depicts culture of society and ensures protection of the people of society. The police is at the threshold of the criminal process, and their role determines justice or injustice in a particular case, in a particular manner, under due process of law, to people's expectations. It was the Muslims gave the concept of police and established police force in 17th century, giving it the name of Al-Shurta. After it, Greeks established police department on these lines. So, uh, police is the part of law enforcement agencies. When we talk of the separation of theory of powers, हम कहते हैं कि legislature का काम है कानून को तश्कील देना, जुडिशरी का काम है कानून को इंटरप्रेट करना, और एग्जेक्टिव का काम है कि उस लॉ पे अमल दरामद. So police is the part of executive. Police is law enforcement agency to put those laws into practice, to implement, to make those laws implement, which are enacted by the parliament. So the role of police in criminal justice system is very important, as if you have to observe the civilization of a society, a country, you have to observe the civilization of the police department of that particular country or area. So, in this regard, heavy responsibility underlies on the police with reference to the discharge of the daily duties with reference to crime and criminals. Black's Law Dictionary के मुताबिक, the governmental department charged with the preservation of public order and the promotion of public safety and the prevention and detection of crime. यानी सबसे पहले पुलिस का काम है मुल्क में, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और कानून पे अमल दरामद करवाना, जुर्म और मुजरमों को डिटेक्ट करना, उसकी तफ्तीश करना, to reach the conclusion. These are the basic functions which the police are performing for the purpose of public safety. Public safety is the utmost target and duty of the police, to maintain the public safety, to preserve the public safety, to protect the person, property, and reputation of the people, to maintain the law and order situation of the country, to preserve an environment and atmosphere of peace and tranquility in the country. So, the word comes from the Latin politia. The police word is derived from the Latin word politia, Politia, politia. That means the civil administration. So, which itself derives from the ancient Greek word polis, and polis means city. So, politia means civil administration. Therefore, police is the point of administration when we talk of the machinery of the government, when we talk of the pillars of the state.
when you talk of the system of the government or politics in a particular country. So, policia means civil administration. Therefore, police are the part of the administration. पुलिस इंतज़ामिया का हिस्सा है और पुलिस की जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर जो है, सूबे के अंदर जो है, अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखना और therefore the police is the part of the administration. Definitions of police. According to Agon Ritter, police is best understood as a mechanism for the distribution of non-negotiable coercive force employed in accordance with the dictates of an institutive grasp of authority for situational exigency, that is the demand. So, police means a mechanism for the prevention of crime in this particular society. General definition. Police are agents or agencies empowered to use force and other forms of coercion and legal means to effect public and social order. So, police are the part of the law enforcement agency, and their duty is to detect the crime, prevent the crime, to arrest the criminals, put the laws into practice, to maintain the law and order situation in the society. Quranic concepts. The Holy Quran assigns the noble task of social protection to the police, a force organized for profound social defense as stated in the following. And let there be among you a force calling others to do good and commanding equity and forbidding evil, and they are those who are the blissful. So that is a noble cause, noble task which has been attributed towards the police. लोगों की हिफाजत करने, उनकी जान माल की हिफाजत करने, उनकी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करने. That is a noble deed, great deed to be guardian of the citizens of your country. That is a worship, that is a noble deed, that is a virtue, that is a sacred deed which has been done by this particular department. So the root of this department is based on noble grounds, noble values, a sacred duty which has been entrusted with this particular department. So सबसे पहले जो है 7वीं सदी में मुसलमानों ने पुलिस का महकमा बनाया. हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में पुलिस का डिपार्टमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश किया, उसमें इस्लाहात लाई गई और उसके बाद जो है यूनानियों ने उन लाइंस पे जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया. दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पुलिस. उसके बाद जो है तो होली कुरान ने एक मुकद्दस जो है फरीज़ा जो है पुलिस को सौंपा है, समाज की हिफाजत, सोशल प्रोटेक्शन. सो दिस इज अ ग्रेट टास्क. Police force established by the Muslim rulers. Shurta Kabir. Shurta Kabir is federal police like FIA, NAB, Rangers, Anti-Narcotic Force, etc. Shurta Sagir. Shurta Sagir is a local crime prevention force and should include provincial, regional, range, district, and municipal police. These are the two categories of police. History of British police. Danish king Canute, also king of England in the first quarter of the 11th century, had laws dealing with police, but Sir Robert Peel fulfilled Fielding's dream by establishing a metropolitan constabulary in year 1829. It was the first ever semi-military, disciplined, trained, and uniformed police force ever introduced in the modern world in 1829. That is Sir Robert Peel. It's the British background. History of American police. By year 1838, Boston
Massachusetts by 1884, New York and Philadelphia had stated having police force on the London Metropolitan Police System. तो 1838 के अंदर जो है बॉस्टन और फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क अमेरिका के शहरों में जो है पुलिस फोर्स जो है उसको एस्टैब्लिश किया. August Vollmer was the first generation American to become the most prominent figure in the history of America. तो अमेरिका में पुलिस के हवाले से जो है अगस्त वॉल्मर का नाम जो है ज़्यादा फेमस है. Police in Pakistan. The Pakistani police is the British transplant having been influenced by its colonial activity. So at present Pakistan police is regulated by Police Order 2002, which came in place of Police Act 1861, and following are the focal points in Pakistani police. So colonial effects की वजह से हमारी पुलिस जो उसका भी सेटअप जो है वो ब्रिटिश कल्चर पे जो है उस पर इस्टेब्लिश किया गया. मुख्तलिफ रैंक ऑर्डर जो है पुलिस के अंदर सबसे ऊपर जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, आईजीपी हैं, उसके बाद एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, एआईजीपी हैं, उसके बाद डीआईजी है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, उसके बाद डीपीओ है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उसके बाद एसडीपीओ है डीएसपी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, उसके बाद एसएचओ है स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसके बाद एसआई है सब इंस्पेक्टर, उसके बाद एचसी है हेड कांस्टेबल और उसके बाद सी है कांस्टेबल. The police in Pakistan has been divided into following departments. Administration department है, investigation of crime department है, law enforcement department है, that is operation watch and ward, patrol wing or traffic control department. So these are the various different departments of the police. So what is the duty of the police? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम. तो सबसे बड़ी जो ड्यूटी है पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना, मुल्क में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को जो है वो मेंटेन रखना, उसको कायम रखना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखना. सो द बेसिक फंक्शन ऑफ द पुलिस इज द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, जराइम को रोकना. And the basic and most important duty or the cause for which the police force came into existence is the prevention of crime. सबसे पहला अहम जो मकसद है मुआशरे में पुलिस के डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करना, जराइम को रोकने, जुर्म के तदराक के लिए, जुर्म की रुकावट के लिए, जुर्म की रोकथाम के लिए. By adopting certain preventive measures, police fulfill the same objects. So कुछ preventive measures को adopt करके पुलिस किसी हद तक अपने काम में कामयाब भी होती है. पुलिस draw its power from the government which allows them to use necessary force and procedure to fulfill their goal. So पुलिस के पीछे रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से पुलिस अपने फंक्शन सर अंजाम देते हैं और मुजरिमों को कंट्रोल करते हैं. Where police arrest any offender during the process of prevention of crime, they can investigate him, even can charge him if found guilty, and can also submit his challan for further action. So there are various powers of the police prescribed by the CRPC criminal procedure, and they utilize their powers, exercise their powers during the criminal proceedings, during the different steps of criminal justice system. Peace and order maintenance. The police also have the responsibility to prevent and control disturbances of the public peace, such as domestic violence, aggressive situations, riots in the streets. Police maintains the peace through watch and ward, patrol and guard. So, through their watching, through their surveillance, through their monitoring, the public have a fear of police not to indulge in the crimes, and where यहाँ कोई झगड़ा है, कोई दंगा फसाद है, तो फौरन पुलिस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए पहुंच जाती है और अपनी जिम्मेदारी जो है उसका अंजाम देती है. Provide protection.
The next most important duty of the police is to provide protection to the inhabitants of the community. The protection includes protection to the person, property, families, and the liberty. So, the protection of person, the protection of property, the protection of reputation, the protection of families. So, the wicked elements of the society, they feel fear um, due to the police. अगर पुलिस फोर्स ना हो तो माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाए, हर कोई जो है इंतकाम की सूरत हाल हो और माशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हो जाए, तो माशरे को जो एक मरबूत निज़ाम के अंदर रखना, वॉच एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में रखना और क्राइम्स को कंट्रोल करना, क्रिमिनल्स पे नज़र रखना और झगड़ों और दंगा फसाद जो है इसको कंट्रोल करना, ये ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटीज पुलिस की सोसाइटी के काम की। लॉ एनफोर्समेंट, it is the duty of police to enforce all special and departmental laws and justice. So, to put the laws into practice, when we talk of the state, तो कवानीन को जो है practically shape में उन पे implement, उन पे अमल दरामद करना, that is the job of the administration, and police is the part of the administration. Recovery of lost and stolen property, it is the duty of police to recover any lost property or stolen property reported to them. On the recovery of such property, they are duty bound to inform its real owner and help them in the process of recovery. So, चोरी की वारदातें हैं, राहज़नी की वारदातें हैं, डकैती की वारदातें हैं, तो उसमें जो माल मसरूक का है, जिसको हम चोरी का माल कहते हैं, उसको रिकवर करवाना और उसके सही मालिक तक पहुंचाना, that is a great task, a noble duty which has been assigned towards the police. Regulation of anti-social conduct. Police is empowered to regulate anti-social conduct and arrest proclaimed offenders. तो ऐसे लोग जो मुजरिम हैं, जो इश्तिहारी लोग हैं, डाकू लोग हैं, रॉबर्स एंड डकैत हैं, माशरे के लिए नासूर हैं, माशरे के लिए मुसीबत है, माशरे के लिए थ्रेट है, उनको कंट्रोल करना, उनको पकड़ना, उनकी तफ्तीशें करना, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना, उनको जेलों में फेंकना, उनको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो है सज़ा दिलवाना. The police are performing many functions on many corners, on many levels. Preparation of cases for court presentation after the arrest of an offender. It is the legal duty of the police to prepare his case for court presentation. It means that police will prepare case files for all cases held by them for superior justice. So, किसी भी क्राइम की तफ्तीश के अंदर जो है आईओ का बड़ा रोल होता है. तो लॉ के मुताबिक जो है जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 आवर्स के अंदर जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के मुताबिक भी और प्रोसीजरल लॉ के मुताबिक भी उसको 24 आवर्स के अंदर जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है. और फिर उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन चलती है और उसका चलान मुरतब किया जाता है और उस चलान की बेस पे जो है अदालत में जो है वो ट्रायल चलता है और मुख्तलिफ जो है आगे प्रोसीडिंग्स और प्रोसेस जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर चलती है. Protection and assistance of victims. It is the duty of police to provide protection to the victims of a crime against offender or any other person, supporting the offender, highlighted by victim himself. Also assist the victim how to gain his remedy against the offender, or if the victim himself requests for assistance, the police will provide him assistance remaining within its power. तो किसी भी शहरी को जान और माल के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये पुलिस को इंटीमेट कर सकता है और ये पुलिस की ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है उस विक्टिम तक पहुंचना, उसकी दाद रसी करना, उसको वासनों के जुर्म से बचाना. और दैट इज़ अ ग्रेट फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बदबख्त वो शख्स जिसकी इज्जत उसके शर की वजह से जाए. तो ऐसे मनफी अनासर जो माशरे में लोगों को तंग करते हैं, लोगों के साथ जुल्म करते हैं, लोगों के साथ जराइम करते हैं, तो पुलिस उनका काम है उनको पकड़ना और उन पर चार्जशीट बनाना, उन पर FIR दर्ज करना, उनको अदालत के कटहरे में लाना, उनको जेल की सलाखों में पहुंचाना और अदालत से उनको सजा दिलवाना. तो ये पूरा प्रोसेस है, पूरा मैकेनिज्म है जो पुलिस जो है वो परफॉर्म करती है. Crowd control. It is the duty of police to control public protest, crowd and riot
The police provide them protection against any unseen threats and control them if they go wild. So मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ पॉलिटिकल सरगर्मियों में, मुख्तलिफ हड़तालों के मंजरनामों में जब लोग हड़तालें करते हैं, सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो पब्लिक इमलाक को जब नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, तो पुलिस फ़ौरन मौका पर पहुंच जाती है, उस मॉब को, उस हजूम को, उस क्राउड को कंट्रोल करती है और लोगों की जान माल की हिफाजत करती है. दैट इज़ गुड जॉब to protect the people from the atrocities and cruelties they are facing, they are confronting. Protection of VIP, police perform some special duties as well, which include the protection of VIPs. A VIP may be from the country or in some cases from foreign. Police has to escort them and guard them. So, बाहर से हमारे जो मेहमान आते हैं, मुख्तलिफ डेलीगेशंस, मुख्तलिफ सफरा, representatives of the different countries, और मुल्क के अंदर भी जो हमारी important personalities हैं, हमारे बिग्स हमारे ऑफिशियल्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना. तो पुलिस हमारे अहदेदारों की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारे प्रेसिडेंट की, हमारे गवर्नर की, हमारे मिनिस्टर्स की और हमारे जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के सरबराह पुलिसों की हिफाजत कर रही है. बाहर से हमारे जो मेहमान आते हैं उनकी हिफाजत कर रही है. दैट इज़ ए जॉब ऑफ प्रोटेक्शन एंड एज वेल द जॉब ऑफ प्रोटोकॉल टू द VIPs. तो VIPs लोगों की को प्रोटेक्ट करना और उनको कंट्रोल फार्म करना, उनकी जान की हिफाजत करनी, that is a sacred duty the police are performing. Regulating traffic. It is the duty of the police to manage the traffic around the country. For this purpose, police has its traffic control branch, which are entrusted with the sole purpose of traffic controlling, for example, traffic wardens. तो ट्रैफिक का निज़ाम जो है due to the rapid increase in the population and due to the great rush on the roads with reference to the traffic, पुलिस के अंदर एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट सेपरेट बनाया गया है, जिसके अंदर जो है ट्रैफिक के कवायद और ज़वाबित बताए जाते हैं, ट्रैफिक के चालान किए जाते हैं, शहरियों को आगाही मुहम कराई जाती है, ड्राइवर्स के लाइसेंस बनाए जाते हैं और प्रैक्टिकली रोड्स पे जो है सिग्नल्स पे खड़े होकर पुलिस वाले जो है सारा दिन बड़ी जांफशानी के साथ धूप में तकलीफ बर्दाश्त करके जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, शहरों को फैसिलिटेट करते हैं. So that is great job done by the police. Pakistan is a country said to be a police state, giving its law enforcement agencies almost autonomous powers with a little or no check and balance. So, except to some constitutional and legal procedural restrictions, हमारा country जो है उसमें police culture है, खास तौर police का जो department है वो अपने यारात से लोग कुछ जो ऑफिशियल्स हैं हमारे वो तजावज़ कर जाते हैं, लोगों के साथ ज्यादती करते हैं. दैट इज़ द another aspect of the department, but overall police are performing their functions very well. लेकिन कुछ जो unfair practices हैं they are present as well in the department, but the police structure and function in Pakistan is still the same as colonial time. तो वो ही जो नौबातिया निज़ाम से जो ब्रिटिश कल्चर वाले हमें एक पुलिस का डिपार्टमेंट उस पर अभी तक वही अंग्रेज़ों वाली छाप चली आ रही है, वही सिस्टम और वही राइट्स एंड रिचुअल्स. Its basic and conventional function includes law enforcement, कानून पे अमल दरामद करना, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना, एंड कम्युनिटी पीस, माशरे के अंदर सुख चैन की फजा जो है उसको बरकरार रखना. That is a great service. So for a secure and growing society, the role of police is an important. तो माशरों की हिफाजत के लिए, माशरों की बढ़ोतरी के लिए, माशरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, माशरों के पनपने के लिए जो है पुलिस का रोल जो है वो बड़ा एक कलीदी अहम किरदार अदा करता है. पुलिस, the role of police is very important in a particular society. जहाँ जिंदगी है, जब तक जिंदगी चल रही है पुलिस का एक रोल है और पुलिस को वो रोल निभाना है. अगर पुलिस वाले अपने उस रोल को आसान अंदाज से निभाते हैं तो एक सेहतमंद मुआशरा जन्म लेगा और लोगों के मसाइल जो है वो मेरिट पे हल किए जाएंगे.
If the environment is safe and healthy, it will attract foreign investors to conduct business in Pakistan. तो हमारे मुल्क के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा बिजनेस चलेगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारी मिलों और मशीनों के पहिए चलेंगे, हमारे जो नाखानदा और बेरोज़गार लोग हैं उनको एक रोज़गार फराहम होगा और लोग अपने अपने काम पे जो है वो मगन रहेंगे, मसरूफ रहेंगे. But until now, it looks like our police is not up to the challenges of modern world and requires reformation. So, in criminology, police has a position of law maintenance body. If it is not working properly, then the state is considered as failed. So, अगर पुलिस अपने फ़राइज़ जो है उसको पूरी ईमानदारी और तनदेही से अंजाम देगी, तो शहरियों की जान माल की हिफाजत होगी, एक सेहतमंद मुआशरा जन्म लेगा, तो फिर हमारा बिजनेस भी तरक्की करेगा, हमारे शहरी भी खुशहाल होंगे. सो इट इज़ द टच स्टोन ऑफ द रोल ऑफ द पुलिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. तो पुलिस का बड़ा एक अहम रोल है. तो कुछ शॉर्ट कमिंग्स और कुछ डिफेक्ट्स जो है वो हर कंट्री के अंदर है, हर सोसाइटी के अंदर है, हर डिपार्टमेंट के अंदर है. देयर आर स्टिल सम शॉर्ट कमिंग्स एंड डेफिशिएंसी व्हिच वी हैव टू कवर. सो ज़रूरत है पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ इस्लाहात लाने की जिससे आवाम और पुलिस के दरमियान एक दोस्ताना माहौल इस्टेब्लिश हो और एक दूसरे पे एतमाद बढ़े, करप्शन का खात्मा हो, हाई हैंडेडनेस का खात्मा हो, फेवरेटिज्म का खात्मा हो, नेपोटिज्म का खात्मा हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का खात्मा हो, तब जहाँ कर हम जो है एक अच्छा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको इख्तरा कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फिर जाके जो है हम क्रिमिनल्स को पकड़ कर उनको तख्तादार तक पहुँचा सकते हैं और अपने शहरों की जान माल की वो बाखूबी तरीके से. थैंक यू.